This poem Kalahandi is written by Jagannath Prasad Das. He was a renowned poet, dramatist, and critic who was born in Odisha in 1936. The poem shows the helplessness and hopeless poverty and hunger of the place called Kalahandi. It is a district in Odisha. In 1966, a severe famine broke out in this district. Das has witnessed the misery of the people of Kalahandi during famine. He wrote this poem a few years after the famine. Kalahandi has been used as a metaphor for the horror of famine and poverty of this modern India. Earlier in the year 1866 too, Odisha suffered a state of severe famine. A very large number of its population had ruined. Then there was a fear in the mind of the people of this district, Kalahandi, that the similar situation might not befall again. The poet is completely frustrated. He sadly expresses the state of the district. He warns that with this condition of the country, India can never enter the technologically advanced stage of 21st century. The poet says that one does not need road maps to go to Kalahandi. Actually, wherever there is misery, that place can be referred as Kalahandi. The geographical state of Kalahandi is described in this way. There has been and is no rain. God of rain has turned away his face from that place. There is no greenery around. ये कविता कालाहांडी नामक प्लेस की एक निराशाजनक कंडीशन को डिस्क्राइब कर रही है जहाँ बहुत ज़्यादा पावर्टी है। ये उड़ीसा का एक ज़िला है जहाँ 1966 में अकाल पड़ा था और उस दौरान पोइट ने वहाँ की प्रॉब्लम्स को देखा और कुछ साल के बाद आफ्टर फ्यू इयर्स उसने ये पोएम लिखी और वहाँ की कंडीशन को उसने डिस्क्राइब किया है। इन दीज लाइन्स, इन द फर्स्ट फ्यू लाइन्स ऑफ द पोएम, he says, put away the road maps now. To go there, you do not need. The poet says that you do not need any road map for going there. Actually, he is reminded of the visit of the Indian Prime Minister who came to visit this place in a helicopter. He shows utter disregard for the helicopter that was then used to reach here. The report is that the then Prime Minister came to inspect the famine of the area in a helicopter. The poet has used Kalahandi as a metaphor for hunger. Wherever there is hunger, there is Kalahandi. Kalahandi and hunger have become synonyms. And even helicopters are of no avail to locate Kalahandi. Kalahandi is everywhere in India. India is a scene of poverty, misery, starvation, and so India is Kalahandi and Kalahandi is India. Cracked ground, drab river sand, all the plans failed, the poverty line receded further. The god of receded further. Wherever you look, there is Kalahandi. In the sunken eyes of living skeletons in rags which do not cover the frail bodies. In the utensils pawned off for food, in the crumbling huts with unthatched roofs, in the exclusive prosperity of having owned two earthen pots. The poet depicts the physical condition of that place, Kalahandi, and he says that as if the god of rain has completely turned away his face, the ground is cracked, it is dried up, it is broken, was no water in the river, the river bed is also dried up, the sand looks dull. It seemed as if all the plans of the government to provide help to people had failed. People, on account that famine, looked poorer. In this way, the poverty line had moved further away. The poet extends the metaphor of Kalahandi and he says that Kalahandi can be seen everywhere. It is not limited to any geographical region.
It is not limited to any geographical region. The clothes are due to hunger and starvation. The eyes of the people have gone deep and inside. Clothes of the people are torn and worn out. Their bodies are not even properly covered. Kala handi can be seen in the utensils that have been pledged to buy some food. Kala handi can be seen in the falling huts of the people. The huts are without proper roofs made of grass and leaves. Kala handi can further be observed in earthen pots that are left with the people. So the images of sunken eyes, skeleton appearance, frail and weak bodies without proper clothes, fallen or decaying huts resemble Kala handi. Wherever these objects are, there is Kala handi. Kala handi is there everywhere in the gathering of famished crowds before charity kitchens, in the marketplaces. In these lines, the poet is saying that काला हांडी is everywhere. कवि कहना चाहता है कि काला हांडी सब जगह है, जहाँ कहीं भूखे लोग हैं, जहाँ कहीं लंगर मिल रहे हैं, जहाँ कहीं मार्केट है, जहाँ बच्चे बेचे जा रहे हैं, जहाँ यंग गर्ल्स को ब्रॉथल्स में भेजा जा रहा है, उन सब के सब जगह पे जहाँ कहीं हेल्पलेस लोग हैं जो अपना घर और चूल्हा छोड़ रहे हैं और सड़कों पे भूखे घूम रहे हैं, वो सब जगह वो काला हांडी है. It is visible in the starving faces of general public. These people are standing before the langars asking for free food. Kala handi can be found in the marketplaces where the poor are selling their children in the open market. They cannot afford to feed them. So Kala handi is in sight in the painful sights of the young girls. They are sold to the prostitution centers. Thus, the poor will get money to feed themselves. In the last image, Kala handi is seen in the silent gathering of the people who, after leaving their house, will have come out to raise slogans in the procession. The poet thus conveys the horrible scene of Kala handi through these images. तो पोएट ने यहाँ पे जो कंडीशन डिस्क्राइब की है वो बहुत ही पिटीफुल है, बहुत ही बुरी है कि लोग जब खाना नहीं खा सकते, खाना अरेंज नहीं कर सकते, तो वो मजबूरी में अपने बर्तन पहले बेच रहे थे, अब वो अपनी यंग गर्ल्स को भी बेच रहे हैं, अपने बच्चों को भी बेच रहे हैं और उनके पास और कोई और ऑप्शन उनके पास है ही नहीं. सो इससे ज़्यादा मिजरेबल कंडीशन कंट्री की क्या हो सकती है कि जब किसी को खाने के लिए अपने बच्चों को या अपनी बेटियों को बेचना पड़े. सो काला हांडी उनके जो सिनोनिम उन्होंने जो मेटाफर की तरह यूज़ किया गया है, ये हमारे कंट्री की पुअर कंडीशन को एक्सप्लेन कर रहा है. Come, look at Kala Handi closer in the crocodile tears of false press statements, in the exaggerated statistics of computer printouts, in the cheap sympathies doled out at conferences, and in the false assurances presented by planners. In these lines, the poet presents the other side of the picture of Kala Handi. People suffering and their little acts to feed themselves are on one side. On the other side, politicians also play false with these poor people. They shed tear in the form of the statements issued to the newspaper journalists. They give false and untrue information to extend help to the sufferers. With the help of computer, they prepare false documents. They organize public meetings to express their misleading and unworthy sympathies. They make false promises of help to the poor. The pain of the sufferers remain unheard, unattended. Thus, the sufferers suffer in a big way. इन ये जो लाइंस हैं ये लोगों की प्रॉब्लम्स को और भी ज़्यादा अगले लेवल पे एक्सप्लेन कर रही हैं, जहाँ पे एक तरफ तो लोग अपने बच्चे बेचने पे मजबूर हैं, दूसरी तरफ जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो झूठ बोल रहे हैं, झूठे आंसू बहा रहे हैं, हेलीकॉप्टर से ट्रैवल करके उनकी कंडीशन को एक्सप्लेन करके न्यूज़पेपर्स में दे रहे हैं, उनको हेल्प करने की फॉल्स न्यूज़ दे रहे हैं और लोकसभा में एक उनको सिंपथी उनके लिए दी जा रही है और लोगों से झूठे प्रॉमिस किए जा रहे हैं और उनको रियलिटी में उनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा. सो ये हमारे कंट्री की उस मिजरेबल कंडीशन की तरफ इशारा कर रहे हैं जहाँ पर अगर कोई भी बुरी हालत, कोई भी बुरी कंडीशन होती है, कोई
फेमिन होता है या कहीं बाढ़ आती है, तो हमारे पॉलिटिशियंस पेपर्स में तो बहुत हेल्प कर देते हैं कि हम यहाँ पे हेल्प एक्सटेंड कर रहे हैं, बहुत से पैसे दिए, कागजों में बस पैसे दिए जाते हैं, क्या कागजों में हेल्प की जाती है, और इन रियलिटी उनकी कुछ भी वहाँ पे मदद नहीं की जाती। सो ये उस स्टेट को एक्सप्रेस कर रहा है। Kala Handi is very close to us in the occasional contrition of our souls, in the unexpected nagging of conscience, in the rare repentance of the inner self, in the nightmares appearing through sound sleep, in disease, in hunger. इन लाइंस में पोएट एक्सप्लेन कर रहा है कि काला हांडी सभी जगह है, जहीं जहाँ कहीं भी बीमारी होगी, भूख होगी, हेल्पलेसनेस होगी, वहीं पर हम इसे देख सकते हैं। और कहीं कहीं ये ऑब्ज़र्व कर सकते हैं जहाँ कहीं हम अपनी मॉरल ड्यूटीज़ को पूरा नहीं कर पाते और रिपेंट करते हैं, वहाँ कहीं पे भी काला हांडी को फील किया जा सकता है। इसको हम फील कर सकते हैं अपनी कंसाइंस में, अपनी मॉरल सेंस में, और अपनी इस बात पे कि हम अपनी नेग्लिजेंस को के लिए सॉरी फील कर सकते हैं। The poet continues with the metaphor of Kala Handi. It can be seen everywhere. There is no need for any one of us to go and see Kala Handi. It can be seen in disease, hunger, and the state of helplessness of the people of India. Our souls at times shrink when we fail to fulfill our moral duties. Similarly, it can be noticed in the pricking of our conscience. At that time, we feel sorry over our negligence. We do have dreadful dreams during our sound sleep. Kala Handi is visible in disease, hunger, and helpless state of the people. There is a lurking fear in the mind of people that the poor may not revolt against this establishment of society, and there may not be bloodshed in future. The poet gives us a warning that if it so happens, we won't be able to enter the 21st century with the Kalahandi type of state in the country. How could we then walk into the celebrated portals of the 21st century leaving Kalahandi behind? पोएट इन लाइंस में एक्सप्लेन यही कर रहा है कि अगर हमारे कंट्री की यही स्टेट रहती है तो हम कैसे एंटर करेंगे नेक्स्ट सेंचुरी में, क्योंकि जब तक हमारी जो पुअर पीपल हैं, अगर हम उनकी हेल्प नहीं कर सकते, उनको सिर्फ लिप सिंपथी देंगे या सिर्फ हेलीकॉप्टर से जाकर वहाँ पे विज़िट करेंगे उन प्लेसेस को, और रियलिटी में कोई भी हेल्प नहीं करेंगे, जैसा कि अक्सर होता है जब भी कंट्री की कोई ऐसी सिचुएशन आती है, तो ऐसी कंडीशन में पोएट हमें बार बार वार्न कर रहा है कि तो हम नेक्स्ट सेंचुरी में एंटर नहीं कर सकेंगे, बिकॉज एज लॉन्ग एज वी डू नॉट हेल्प अवर पुअर पीपल, एज लॉन्ग एज वी डू नॉट हेल्प अवर कॉमन पब्लिक, till that time we cannot enter the next century.